क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स, all the physical quantities which have all the physical quantities have been classified into two groups: scalar quantities, vector quantities. Scalar quantities, these are the quantities which have magnitude only but no direction. In a scalar quantities जो है which have only magnitude but no direction. For example, mass, length, time, speed, volume, etc. Vector quantities, these are the quantities which have both magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, etc. Representation of a vector. Symbolically, a velocity vector is represented as v vector. A force vector is represented as f vector. ऊपर तो arrow है, etc. Graphically, the vector A is represented by an arrow OB. The length of the arrow OB represents the magnitude of vector A, whereas the direction of the arrow OB represents the direction of the vector A. In a point O is called, इसको हम कहते हैं tail of vector A. Point B को हम कहते हैं head of vector A. Tail, head. Point O is called tail of vector A. Point B is called head of vector A. Unit vector. A vector having unit magnitude and arbitrary direction, यानी value 1 है, is called unit vector. It is represented as a cap. A के ऊपर कैप है, इसको हम कहते हैं कैप, a cap. Mathematically, a vector is equal to magnitude of a and mod a cap, या a cap is equal to a यानी vector a divided by magnitude of vector. इक्वल वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज टू वेक्टर्स a and b are said to be equal if they have equal magnitude and same direction. अगर इनका magnitude same है, equal है और direction same है, इसको हम कहते हैं equal vectors. Negative vectors क्या है? Negative vectors, two vectors equal in magnitude, यानी magnitude तो equal है a वेक्टर और b वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. यानी टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ वन अनदर. इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन a is equal to minus b. a वेक्टर is equal to minus b वेक्टर. कोइंशियल वेक्टर्स क्या है? कोइंशियल वेक्टर्स एंड द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइंशियल if their initial points are common. यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, a and b are two vectors, o is their common initial point, इसको हम कहते हैं कोइंशियल वेक्टर्स. यानी दो वेक्टर्स a and b, if a and b are two vectors, o is their common initial point, हम इसको कहते हैं कोइंशियल वेक्टर्स. अब कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है? these are those vectors which are acting in the same plane. अगर हमारे पास प्लेन है, प्लेन के अंदर a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, कितने वेक्टर्स हैं? अगर एक प्लेन के अंदर है, इसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. यानी these are those vectors which are acting in the same plane, एक ही प्लेन. Localized vectors, these are those vectors whose initial point is fixed. Localized vectors में non-localized vectors, these are those vectors whose initial point is not fixed. इसमें fixed initial point है, इसमें fixed नहीं है. यानी these are those vectors whose initial point is fixed. Localized vectors, these are those vectors whose initial points is not fixed. Thank you.